इस देश विदेश के 35,000 से ज्यादा विजिटर इस बार इंडिया स्टोन मार्ट में भाग ले रहे हैं। इसमें 47 देशों के 18 से ज्यादा ट्रेड विजिटर भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके दिशा निर्देशों के अनुसार हम सभी शिल्पकारों को शिल्पग्राम में बिना कोई शुल्क लिए बूथ मुहैया कराते हैं, ताकि इन शिल्पकारों को अपनी कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच और मार्केट दोनों मिल सके। मंच पर मौजूद वाणिज्य उद्योग एवं व्यवसाय मंत्री श्रीमती सुभद्रा रावत जी, जिनके नेतृत्व में राजस्थान में उद्योग निवेश के लिए बेहतरीन माहौल बना है। उद्योग मंत्री जी की सहजता ने उद्योग और सरकार के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया है। इंडिया स्टोन मार्ट के उद्घाटन समारोह में आपका तहे दिल से स्वागत है। मंच पर विराजे हुए खान मंत्री श्री माननीय मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी, एसीएस उद्योग श्रीमती विनोद गुप्ता जी, एसीएस खनिज एवं पेट्रोलियम सुबोध अग्रवाल जी, रिको और सीडोस के चेयरमैन श्री कुलदीप काका जी, रिको एमडीसी की नकाते से प्रसाद मदन जी, आपके सबके सहयोग और मार्गदर्शन से इंडिया स्टोन मार्ट के 11वें एडिशन का भव्य आयोजन हो रहा है। मंच पर मौजूद फिक्की के डायरेक्टर जनरल सीडोस के सीईओ मुकुल स्तुति जी, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सबका इंडिया स्टोन मार्ट के 11वें एडिशन में स्वागत करता हूँ। Heartily welcome to historical, beautiful big city Jaipur, to all our guests, exhibitors, trade visitors who have come from the different countries and different states of India. India Stone Mart has successful in making its mark with the country and abroad only with the cooperation of all of you. माननीय मुख्यमंत्री जी, आखिर में आपसे गुजारिश है, आपने प्रदेश की नई लिप्स और एमएसएमई के साथ कई पॉलिसीज की सौगात दी है। इसी तरह नई माइनिंग पॉलिसी की भी घोषणा जल्दी कर दें, तो इससे सरकारी स्तर पर माइनिंग और स्टूडेंट्स इंडस्ट्री की अड़चन दूर होगी और इस सेक्टर में राजस्व और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। अंत में पंक्तियों के साथ मैं वाणी को प्रणाम देता हूँ। यह पत्थर है सदा के लिए, अशोक का चक्र है ये, कीर्ति स्तंभ है ये, महल में ताज है ये, किले में लाल है ये, भूत और भविष्य है ये, इसलिए आओ सदाएं से सवारें से, क्योंकि पत्थर है सदा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for highlighting how this industry and how this exposition has grown under the leadership of Honorable Chief Minister in size and stature, impact and impression. And now, ladies and gentlemen, we invite the views of one of the prominent leaders of the stone industry, who are also the main organizers and also the principal sponsors. I'd like to request Shri Kuldeep Rankaji, the Chairman RICO and CDOS, for his progressive expressions. Honorable Chief Minister, Sri Ashok Gehlot ji, under whose vision, leadership, we are organizing this event for the 11th time. And this is the first fair post-COVID in the whole continent of Asia. Because of his vision and guidance, this has grown in size and proportion. And this is also one of the top 5 stone fairs of the world. Honorable Minister Industries, Suputra Rawat ji, Srimati Usha Sharma ji, Mukhya Sachiv, Srimati Vinod Gupta ji, Additional Chief Secretary Industries and Commerce, Sri Subodh Agarwal ji, Additional Chief Secretary Mines and Petroleum, Sri Niranjan Saxena ji, Sri Ashok Kajaria ji, Sri Rakesh Kumar Gupta ji, Sri Siprasad Lakate ji, Mukul Rastogi ji, all the members of the trade, exhibitors, delegates, visitors, all the ladies and gentlemen, on behalf of the CDOS, RICO and FICCI, I extend a very warm welcome to all the dignitaries on the dais, all our delegates who have come across different parts of the world to witness this exhibition. As we all are aware, we have about 1,500 plus participants in this fair. It was a big challenge whether we should organize when the visa restrictions are still not over in most parts of the world. Europe is seeing some of the conflicts. Many of the countries have started feeling the recessionary trends, and the industry is showing signs of difficulties in some parts of the world. However, under the guidance of the Honorable Chief Minister,
we decided to take the lead and go ahead with the first fair post-COVID in the Asian continent. As we all are aware, our history, our culture, our traditions, our art, our religion is primarily around stones. When we look at the monuments in any part of the globe, no country's history is complete without stones. Whether it is the seven wonders, whether it is the history of all the continents, or even our own country, if we look at Taj Mahal, the dimensional stone of Rajasthan, marble from Makrana, is one of the such examples. India is one of the largest producer of stones in the world. We have 65 million tons production every year from the country. So it is the fourth largest exporter. But a large part of this stone is consumed within the country as well. Rajasthan is contributing equally to this growth of the nation. Rajasthan accounts for almost about 35 million ton production every year out of the 65 million ton of the national production. Rajasthan is unique because it has all types of dimensional stones, whether it is granite, marble, sandstone. In marble and sandstone, we account for 90% of the production of the country. Honorable Chief Minister thought of creating an institutional mechanism by creation of CDOS. The first edition of the Stone Mart started in the year 2000 when Ma'am Vinu Gupta was ED and RICO. Since then, this has taken shape and grown in leaps and bounds. The industry employs about 3 million people in the country, and in Rajasthan about 1 million people. It covers large part of the country like Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat, Telangana, Tamil Nadu, Madhya Pradesh. They are the major producers of dimensional stone in the country. We contribute to 55% of the production, and as a potential global leader in exploration, mining, processing, the RIPS 2022 has come at the apt time. The 20,000 units which are already functional in the state could grow, and many more units could come. The total exports from the total revenue collection of the country as on date is $1.35 billion US, and it accounts for 18% of natural stone production. We have a lot of variety in this state. If we look at districts of Nagaur, Udaipur, Rajsamand, Banswara, Dungarpur, Jaipur, Sirhut, Bhilwara, and Ajmer, all these districts are major producers of dimensional stone. And Makrana marble has become internationally well known across the different parts of the world. Whether it is the India Gate, Umaid Bhawan Palace, Fatehpur Sikri, they are fine examples of our sandstone industry. The sector, despite its large presence and its potential for revenue and growth, has a lot of challenges. While the sector is growing at 15% per year in past few decades, there are many challenges which the sector is facing. We all understand that fragmentation across the whole value chain has created a lot of problems in the ecosystem of the stone industry. We are aware that extraction, transportation, handling, trading, processing, refining, and final retail sale to the consumer. This involves large number of processes. Integration of all these players and bringing about economic and environmental efficiency has been a major challenge. With the growing environmental concerns, the wastage which is created in the industry and their end user by recycling has always been a constant source of trouble, and many of our researchers, friends from industry, are trying to find solutions to that.
I recollect when I was MD RICO in the year 2006, when we had visited Kishangarh, Ashok Patil is sitting here, the whole town was full of marble slurry. Thereafter, a dumping yard was established there, and now the dumping yard is also a net revenue earner. The marble slurry from there is going to Morbi, Gujarat for building construction industry. So a lot of changes have happened, but there is a long way to go. The wastage in the industry is almost about 65% from the point of mineral exploration to the final sale to the consumer. And that is leading to a lot of problems relating to overproduction of waste heaps. And also the cost of production is still very high in our country. While China has witnessed a lot of problems in recent years, and China provided for 40% of export of natural stones in the global market, presently because of the trade scenario between the US and China, there is a new opportunity for our country and for also the industry in the state. We need to capture it at the right moment. The exports in last few years have picked up. If we could create a supply chain which is hindrance-free, which is transparent, if we could provide the leases at much faster rate, if we could also provide the environmental clearances for the units to come up at a faster pace, we will be able to match the global demand, which is picking up year after year. CDOS as an institutional support to the industry has been working for many years for creation of quality consciousness, and therefore our world-class labs were established in CDOS. Many of our members from the trade are using the facilities of the testing lab which CDOS is providing. Architecture Excellence Awards were also started so as to support the end users and the architects and the building industry. The exhibitions have been organized in different parts of the state to further the cause of the stone industry. I'm sure with the untiring efforts of CDOS, members of the trade, and all the stakeholders, the challenges which the sector is facing, we will all be able to address them in times to come. This 11th edition of India Stone Mart has presence of exhibitors from Iran, Turkey, China, and Portugal. And there are many business visitors from USA, UK, UAE, Australia, Russia, Portugal, Germany, Jordan, Canada. I'm sure they would have a pleasant experience and would also be able to trade mutually in this exhibition. For the next 4 days, we would have a series of events and all our friends from the industry and trade would benefit. At the end, I would like to thank each of you for making to this event. Thank you. Thank you, sir, for your very comprehensive address, highlighting the very importance and the magnanimity of the India Stone Mart, the massive and the impressive footprint which the industry has been able to cast towards contributing to the national GDP and the exports, and also some of the challenges which the industry needs to pay heed to, and also highlighting how CDOS stands committed in addressing them and overcoming them. And now requesting our respected Chief Secretary, Madam Srimati Usha Sharma ji, to kindly address the open stand. Honorable Chief Minister Rajasthan, Honorable Industry Minister Rajasthan, Additional Chief Secretary Industries and Commerce, Additional Chief Secretaries Mines and Petroleum, Chairman RICO and CDOS, Managing Director RICO, Deputy Secretary General FICCI, Shri Ashok Kajaria ji, Chairman FICCI, Rajasthan Council, Shri Rakesh Kumar Gupta ji, Vice Chairman CDOS, Shri Mukul Rastogi, Chief Executive Officer CDOS, Senior Officers from Government of Rajasthan,
distinguished members of trade and industry Rajasthan, members from the media and the press, ladies and gentlemen. It gives me on this occasion, gives me a huge sense of pride to be a part of this very, very evolved and over the years has really gained an international status, the Stone Mart. This is 11th in succession, and I really extend a very, very warm welcome to our Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlot ji and other dignitaries on the dais and distinguished exhibitors and the delegates who come and they are participating in the event. This platform has grown strength to strength, and as mentioned by Shri Kuldeep Raka, he's given a very comprehensive view of this Stone Mart and the advantages which are linked to this platform, which has already been mentioned. As we all know that economic activity was hugely disrupted during the time of COVID, last 2 years because of the COVID break. The industry suffered a lot, and stone industry was no exception to it, especially in mining, processing and handicraft. However, now it's a great relief to us, and I can see the smile on everyone's face that the industry is picking up now. And this event, we are very confident will provide a huge impetus to the growth of stone industry in the country. Post-COVID, this world is looking towards India for exploring investment and business opportunities in a big way. And Rajasthan in particular has emerged as a very favored state for investment. And all of us know that we had Invest Rajasthan, and this is rather in a quick succession that we are having an event, and the kind of we saw the success of this Stone Mart, and Mr. Ashok Kajaria, who's there sitting in the dais, he himself was mentioning before we were entering this convention was that this Invest Rajasthan was a huge success under the leadership of our Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlot ji, and this was covered by major newspapers in the country. So it's definitely a golden opportunity for our Indian stone industry to grow at a very fast pace. And international events like Stone Mart will definitely act as a catalyst. Now, the huge strength which is assigned to this Stone Mart is that it has very effective B2B meetings. And right from the beginning, since this has been conceived, the strength of this mart is B2B meetings, and I'm given to understand that this time also, because this is a 3-day, 4-day event, 4th day, you open it for the public, that we're going to almost have around 2,000 B2B meetings, which really is a huge indicator of how meticulous the planning has been done by RICO, by Industry Department, and by FICCI, who are the partners for conducting this event. We are definitely witnessing very rapid advancement in the field of technology, not only through the established players, but also through the startups. And I'm very happy to share that Rajasthan will also be launching its startup policy very soon. Modernization, adoption of mining, processing technology in an environment-friendly manner is to improve the productivity, minimize the waste, which my colleague Mr. Kuldeep Raka was also mentioning कि किशनगढ़ में पहले जो है कितनी marble slurry हुआ करती थी, but because of the use of technology, now this slurry is being turned into a huge asset. So the way how do you minimize the waste and how do you sort of turn it into an asset? There is a huge potential to work on in this sector. And environmental issues on account of mining activities also need to be addressed in terms of adopting new technologies, working on gainful utilization of the stone waste to make this as a zero waste industry. We do come across the cases on silicosis, but Rajasthan government has done a lot of work in taking care of silicosis cases, and we are
really working on the prevention part, where I, with my colleagues from industry department and mining department, we are coming up with plans, but rather we already have plans that which are the areas where preventive measures need to be taken with the help of all our friends from the mining industry as to how to now have a zero silicosis case in Rajasthan. We've taken some very, very serious initiatives in terms of policy initiatives. We formulated various schemes to achieve this objective. Rajasthan, as always, is very, very open to suggestions, very receptive to the idea in terms of how do you prevent this, how do you increase the productivity, introduce new technologies, and reduce the energy consumption for overall development of the sector. As we all know that this stone industry engages a lot of work, provides huge employment to workers. Now, and majority of them, as we all know, are in unorganized sectors. So there is a need to sort of address this issue. How do you sort of do the proper skilling? How do you take care of the health checkups? How do you sort of adopt various safety measures? Is one area we are working, but we need to work even more. And this should become a part of our SOPs, a basic practice while we work in this industry. Regular, as I said, that regular training of the manpower, capacity building, enhancing the job opportunities, updating with the latest technologies is of utmost importance. And I'm so sure that my colleagues from the mining industry and stone industry who are participating in the event are definitely doing a lot in this and taking care of all these issues, because this would surely help the industry to grow, to improve the overall efficiency in production, in terms of branding, in terms of marketing. And there are many features which have been added to the Stone Mart because of the great initiative taken by Additional Chief Secretary Industry and Chairman Rico, MD Rico, under the able leadership of Honorable Minister for Industry. एक पैरेलल सेशन जो है आर्किटेक्ट्स का हो रहा है, जो कि पहले ये अभी ऐड हुआ है. This does a huge value addition to the stone industry. And I also know it for sure, because of COVID, not many could join, but they've sent their people to participate in this mart, because this has gained the status of a very big international mart. And together with the support of CDOS, DECO and FICCI, it definitely provides a direct interface between the stone producers, technology providers and stone users. This event showcases the best of creativity in stone, and in fact, I get to hear from my friends, and they wish to come, that they've never seen such range of display of stone. I mean, there's an absolute riot of colors when it comes to Kota stones or granite or marble or any other stone. So it's an event in terms of B2B, in terms of business generation, but also to see the best of creativity by our people. I mean, it's an absolute delight, and this event definitely showcases variety of such stones. So I'm very, very sure, and I really compliment the team. I really congratulate the team for organizing this very, very successful stone mart. And I'm sure the participants are going to benefit from this event hugely as a result of interaction, dialogue, and Rajasthan once again will confirm that this is the state for investment. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for further introducing us to the land of immense opportunities in Rajasthan and the various conducive and enabling policies and initiatives which the state government has been taking under the leadership of Honorable Chief Minister, giving a very conducive environment to grow and evolve and to do business and encouraging export and imbibing technology. और देवी सचिव, जैसे कि हमने सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे बोर्ड और डिसाइसिव डिसीजंस लिए गए हैं और माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी के गाइडेंस में इन्हें
ग्राउंड लेवल पर इन्हें इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके कारण निर्यात में भी हमने बढ़ोतरी देखी है, उद्योग बढ़ा है। तो आइए अब जानते हैं हमारे माननीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी के विचारों को उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनसे मैं निवेदन करती हूँ सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी और मंच पर उपस्थित राजीव अरोड़ा जी, अध्यक्ष लघु उद्योग निगम लिमिटेड, श्रीमती उषा शर्मा जी, सचिव राजस्थान सरकार, सम्माननीय सुरेश मोदी जी, सम्माननीय वीनू गुप्ता जी, सुबोध अग्रवाल जी, कुलदीप राका साहब, शिव प्रकाश नकाते जी, अशोक कजारिया जी, राकेश कुमार जी गुप्ता, मुकुल रस्तोगी जी एवं भारत देश और विदेश से आए हुए उद्योग एवं व्यापार जगत के सभी प्रतिनिधिगण, सम्मानित मंच, मीडिया एवं प्रेस के सभी साथी बंधु, आज के 11वां ये हमारा एक एग्जीबिशन हो रहा है इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के अवसर पर भारतवर्ष एवं विदेशों से आए हुए पत्थर उद्योग के सम्मानित उद्यमी बंधुओं जो यहाँ पर आज उपस्थित है। मुझे खुशी है कि राजस्थान से ही इसकी शुरुआत की गई थी और आज 11वां आयोजन हमारे गुलाबी नगरी जयपुर में हो रहा है। इस पे पधारने पे मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ सभी का। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल स्टोन इंडस्ट्रीज प्रदर्शन का 11वां संस्करण 10 से 13 नवंबर के दौरान जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है और राज्य सरकार ने रीको के माध्यम से पत्थर उद्योग के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 1998 में सीडोस का गठन किया गया था। प्रथम इंडिया स्टोन मार्ट के आयोजन के उपरांत इसमें भाग लेने वाले की संख्या अधिक से अधिक आए दिन जब भी कोई आयोजन होता है हर वर्ष में उसमें बढ़ती ही जा रही है। इसमें पत्थर एवं मशीनी टूल्स के उत्पादों प्रदर्शित करने वालों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और मुझे खुशी है कि इंडिया स्टोन मार्ट का पहला संस्करण सन 2000 में हुआ, वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इतने दिनों से कि जो भी शुरुआत या प्रारंभ किसी भी योजना का राजस्थान में किया गया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किया गया, वो कोई भी ऐसी योजना नहीं है राजस्थान में कि वो असफल हुई हो, हमेशा उसमें प्रगति ही होती आ रही है, जो मैंने रिपोर्ट देखा था। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से दूसरे देशों के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। राजस्थान से ऐसी योजनाएं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सोच और जो विजन है वो एक नए आयाम स्थापित करता है। उद्योग के क्षेत्र में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए और उनको लाभ किस तरह से दिया जाए, राजस्थान के युवा और महिलाओं को भी लाभ किस तरीके से दिया जाए, एक से एक योजनाएं हमारी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसी योजनाएं जो कि धरातल पे उतरी। ऐसा पहली बार हुआ, इन्वेस्ट समिट होते आए थे, लेकिन पहली बार ये रिकॉर्ड है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में रोड शो किए गए जिसमें कि राजस्थान का जो पारंपरिक औद्योगिक उद्यमी है वो उभर कर आया और प्रत्येक जिले से रोड शो होने से ये फायदा हुआ कि जो वहां का लोकल है, चाहे वो तहसील का हो चाहे गांव का हो, वो उद्यमी बाहर निकल के आया और राजस्थान की योजनाओं का उसे लाभ दिया गया। चाहे स्टाम्प ड्यूटी में छूट हो, बिजली कर में छूट हो, हमारी एमएसएमई की योजना हो, रिप्स की हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, जिसमें कि हमारे जो 25 लाख तक का करता है, कोई भी अपना उद्यमी इन्वेस्ट करता है
तो उसे 8% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से देय होती है। जो 5 करोड़ तक का करता है उसे 6% ब्याज अनुदान राशि देय होती है। जो 10 करोड़ तक का करता है उसे 5% अनुदान राशि देय होती है। और अन्य योजना हमारी सारी, चाहे होटल्स को इंडस्ट्रीज का दर्जा देना हो, राजस्थान में इन्वेस्ट किस तरीके से बढ़ाया जाए, वन स्टॉप शॉप में हमने अभी नया किया है, वीरू जी और सभी ने बैठ करके, कि महीने के प्रथम बृहस्पतिवार को सारे 14 विभाग के अधिकारी वन स्टॉप शॉप में रहेंगे और मैं भी रहूंगी वहां पर मौजूद, जिससे कि फेस टू फेस आकर के इन्वेस्टर्स अपनी कोई भी समस्या उसका समाधान कर सके। हमारी सरकार का यही प्रयास रहेगा। और जो अन्य राज्यों से उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, राजस्थान सरकार की जो योजना है, चाहे चिरंजीवी योजना हो जिसमें 10 लाख तक का तो देंगे ही देंगे प्राइवेट अस्पताल, उसके साथ साथ कोक्लियर इम्प्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, ऐसे जो बड़े ऑपरेशन है उनके लिए भी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने छूट दी है। चाहे दुर्घटना में हो, पहले दुर्घटना हो जाती थी तो वो परिवार असहाय हो जाता था, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने व्यवस्था करी कि अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए उस महिला के लिए तुरंत प्रभाव से उसके खाते में दे दिए जाएंगे। ऐसी जो योजनाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने की, चाहे किसान मित्र योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, उड़ान हो, RGSH हो, जिसमें कि एक कर्मचारी के लिए पूरी मेडिकल की व्यवस्था की गई है, ओल्ड पेंशन की व्यवस्था जो देश में एक पहला उदाहरण है, पालनहार हो, वृद्धावस्था हो, और तो बोना पेंशन भी की गई। इतनी पेंशनों की योजनाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने की। कोरोना काल में अगर कोई भी हो, किसी भी योजना से नहीं जुड़ा हो, अगर उन दंपति की मौत हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, तो उनको तुरंत प्रभाव से 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए सरकार की तरफ से। और उन बच्ची जैसे ही 18 साल की हुई तो उसके खाते में तुरंत प्रभाव से 5 लाख रुपए डाल भी दिए गए, हमें पता भी नहीं लगा। तो ऐसी योजनाएं राजस्थान की सरकार ने की है। और उद्योग के क्षेत्र में जो राजस्थान हमारा है वो पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे यहाँ का पत्थर देश विदेशों में जाता है, चाहे संगमरमर हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, सैंडस्टोन हो, स्लेट हो, कोटा स्टोन हो, पत्थर खनन, प्रसंस्करण, मशीनरी उपकरण, कंज्यूमेबल्स खनन हेतु भारी मशीनरी और पत्थर का विस्तृत किस्मों का यहाँ पर आज की प्रदर्शनी में प्रदर्शन किया जा रहा है। और इससे उद्यमियों को, जो खनन विभाग जो खान का काम करते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीजियल को इसमें बेनिफिट मिलता है और संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 200 से 450 के लगभग अब ये बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का 4 दिवसीय जो भव्य विशाल अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन के लिए सीडॉस एवं फिक्की द्वारा किए गए प्रयास जो है वो बहुत ही सराहनीय है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी जुड़े हुए बंधुओं, सरकार के रीको, अन्य संस्थाओं, मीडिया और हमारे अधिकारीगण जिन्होंने इसमें भाग लिया है उनको भी, और प्रदर्शनकर्ताओं की भी सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। नववर्ष की भी साथ साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। दिन दूनी रात चौगुनी आप प्रोग्रेस करें। और हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी का जो एक करिश्माई नेतृत्व है कि हर क्षेत्र में एक अग्रणी रहना, ये बहुत बड़ी हमारी सरकार की उपलब्धि है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। और 2022 में जो भी यहाँ भाग ले रहे हैं उन्हें पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से स्टोन मार्ट इसका नाम दिया गया है, तो स्टोन मार्ट की तरह ही हमारे राजस्थान की हर योजना एक तरह से पक्की है। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपके संबोधन के लिए। Very enthusiastic and a very progressive address. Thank you, Honorable Minister Ma'am. और देवी सज्जनों, अब हम सभी हमारे माननीय मुख्य अतिथि, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनके आशीर्वचन के इच्छुक हैं। तो आप सभी की तरफ से करवत होकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ हम सभी को संबोधित करने के लिए, हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। हमारे उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी, चेयरमैन राज्य को राजीव अरोड़ा जी,
सुरेश मोदी जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, एसीएस इंडस्ट्री विनोद गुप्ता जी, एसीएस माइंस सुबोध अग्रवाल जी, कुलदीप नाका जी, शिव प्रसाद नकटी जी, निरंकर सक्सेना जी, अशोक कलिया जी, राकेश गुप्ता जी, मुकुल रोहतगी जी, तमाम हमारे पधारे हुए देश और विदेश के अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि करीब 22 साल पहले स्टोन मार्ट की स्थापना की और कोरोना काल से 2 बार संभाल नहीं पाया, पर लगातार आप सबके सहयोग से हर बार बहुत सफल रहता है और चर्चा रहती है इस मार्ट की। और वो सक्सेस इसलिए रहा कि जब आप आए होंगे, आज भी आप आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, एक्सचेंज व्यूज होंगे, वो भी आने वाले वक्त में स्टोन मार्ट का जो उद्देश्य है उसको कामयाब करने में सहयोगी साबित होंगे। स्टोन का अपना एक बहुत ही शानदार इतिहास है। मानव की सभ्यता जो शुरू हुई है, तब से ही पत्थरों का ही आधार रहा है, क्योंकि जो शिलालेख थे, जो बाद में जो सामने आए हैं, उसी में इतिहास लिखा हुआ था। सम्राट अशोक के बारे में राज जो चिन्ह है, अगर पत्थर पे नहीं होता तो आज वो खोज नहीं हो पाती। तो सदियों से पत्थर का अपना एक राह है और राजस्थान का सौभाग्य है कि राजधानी में जो बड़े बड़े हमारे राष्ट्रपति भवन हो या पार्लियामेंट हो, इंडिया गेट हो, उन सब में राजस्थान के पत्थर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और तो और जो अभी राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए भी राजस्थान में पत्थर ही लगा रहा है। मुझे मिले आके अभी विश्व हिंदू परिषद के जो लोग राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जो भी एरिया था उनका इलीगल माइनिंग हो रही थी, तो मैंने कहा राम मंदिर बने, इलीगल माइन से, इलीगल पत्थर से वो वंचित नहीं है। इसलिए आप पहले इसको फॉरेस्ट की प्रॉब्लम हो या जो पार्क बना हुआ हो, जो तमाम समस्याओं का हल करवा केंद्र सरकार, तो उसके बाद में राम मंदिर बनेगा तो मैं समझता हूँ लीगली माइनिंग होने के बनेगा, पत्थर से ज्यादा ठीक रहेगा और राजस्थान की सरकार को भी राजस्व मिलेगा और लीगल माइनिंग शुरू हो जाएगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो मुझे खुशी है वो काम भी हो रहा है। पर जो ये सेक्टर आपका है, रियल एस्टेट के साथ संबंध रखता है, बहुत ही ऐसा संबंध है आपस में। ये उद्योग तो आगे बढ़ने बढ़ना है, पर जो चुनौतियां आपके सामने आती है, या जो पहले के जमाने में मुश्किल से माइनिंग होती थी, मशीनरी बाहर से आती थी, आप लोगों के प्रयास से धीरे धीरे अब मशीनें आने लग गई, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, कटिंग हो, सभी तरह के काम ऐसा हो गए और उद्योग दिन दुनिया रात 24 प्रगति करते जा रहा है। बहुत बड़ा शेर राजस्थान का है इस काम के लिए। मार्बल के अलावा कॉर्पोरेट हो, चाहे वो आपका बाद में निकल गया ग्रेनाइट,
भी राजस्थान में बहुत प्रगति कर रही है। इस प्रकार से माइनिंग ऐसा क्षेत्र है जिसको सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो इस प्रकार से आपको सब तरह की सुविधाएं, आपको सब तरह की परेशानियों से मुक्त करें, जिससे कि एक तरफ रेवेन्यू भी आती है, दूसरी तरफ रोजगार जो आज बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है। चुनौती क्या है? महंगाई के साथ में रोजगार चैलेंज है देश के सामने। उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग के काम की बहुत बड़ी भूमिका है और मैं समझता हूँ कि उसमें जरूरत है कि हम लोग इस प्रकार से आगे बढ़ के वो फैसले करें जिससे कि इस सेक्टर को प्रोत्साहन मिल सके। माइनिंग पॉलिसी बहुत शानदार है, आप जो मानते होंगे पॉलिसी जो भी है राजस्थान कर रहा है। अभी टूरिज्म की पॉलिसी बताया आपको। जब मैं केंद्र में सिविल एविएशन टूरिज्म मिनिस्टर था 85, तब मैं मांग किया करता था राज्यों से आप टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दो। अभी तक नहीं मिल पाया। मेरे हाथ से लिखा था इस बार, तो मेरी कलम से अब वो टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है। कोई मामूली फैसला नहीं है। पूरा टूरिज्म सेक्टर वाले विकसित कर रहे हैं, क्योंकि होटलियर, ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स सबको लाभ मिला। और कोविड के कारण से जो तकलीफ आई थी, मैं समझता हूँ वो जो उस वक्त में जो घाव हुए थे उसमें बहुत अच्छे ढंग से मरहम लगा है। उसी प्रकार से माइनिंग का काम है या स्टोर का काम है। एमनेस्टी स्कीम निकाले या पहले आपको खाली इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी, अब कैपिटल सब्सिडी मिलने लग गई। तो फैसले तो सरकार की तरफ से ऐसे हो गए जिससे कि राजस्थान के अंदर अधिक से अधिक उद्योग आए और एम्प्लॉयमेंट मिले, रेवेन्यू बढ़े और ये राजस्थान का हो। यही सोच करके मैं समझता हूँ जो बजट की घोषणा हमारी है उसी रूप में, जिससे कि इस सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिल सके। चुनौती बहुत है। तो आपके 65-70% वेस्ट जाता है। उसके ऊपर अभी सीएसबी कह रही थी आपको हम सबको चिंतन करना चाहिए कि और क्या रिसर्च हो सकती है। कम से कम वेस्ट हो 60%, 70% वेस्ट हो तो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नॉलेज भी नहीं है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या स्थिति है या चाइना में क्या है। अगर वहाँ बहुत ज्यादा एडवांस है कि बहुत कम वेस्ट होता है तो फिर हमें भी उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से कम वेस्ट हो 65% के लगभग कहते हैं वेस्ट होता है, तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। तो रिसर्च आप करें या दुनिया के मुल्कों में क्या हो रहा है वो तो आप जान रहे हैं, कोई ज्यादा उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। अभी जो इन्वेस्ट राजस्थान हुआ उसे माहौल बना है। सुना कि 800 करोड़ रुपए के तो एमओयू खाली आपके स्टोन को लेके हुए राजस्थान का, तो एक शुभ संकेत है कि आने वाले वक्त में और इकाई लगेगी। इकाई अभी बताया गया मुझे लगातार लगती जा रही है राजस्थान के अंदर। अच्छी बात है कि राजस्थान के अंदर अगर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसका अपना लाभ मिलेगा। ये जो प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने, अब आपकी चुनौती है क्योंकि टाइल्स बनने लग गई है। गुजरात के अंदर ज्यादा काम, मेरे घर एक करियर साहब बैठे हैं सुखलिया जी, इनका भी कंफ्लिक्ट हो रहा होगा। क्या करिए नहीं, आप भी टाइल्स बनाते हो, टाइल्स का काम आप में टाइल्स का काम है।
कल्चरल टैक्स मेरे ख्याल कोई काम आपका है। तो ये भी जो बड़े रूप में टैक्स बन रही है गुजरात के अंदर, उससे आपका कंफ्लिक्ट रहता है। पर मैं समझता हूँ उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है आपके माइंस का, पत्थर का, स्टोन का, एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत भयंकर। आप एक्सपोर्ट की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो मेरे ख्याल से। इतना एक्सपोर्ट की डिमांड है, उसके अनुपात में आप शायद नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी डिमांड है एक्सपोर्ट की भी। तो यही तो कंपटीशन चलता रहेगा। पर अल्टीमेटली चुनौती जो आपके सामने है वो पर्यावरण के और जो माइनिंग का जो आपको देते हैं, इसके बीच में ही थोड़ा वक्त लग रहा है राजस्थान के अंदर में। जो मुझे बताया गया, मैं चाहूंगा हमारे बैठे हैं अधिकारी लोग, शीर्ष बैठे हैं, शीर्ष को मैं कहना चाहूंगा कोई तरीका निकालें जिससे कि इस उद्योग को माइंस डिपार्टमेंट और पर्यावरण वाले मिलकर के कोई रास्ता ऐसा निकाले जिससे कि तत्काल पर्यावरण की स्वीकृति मिल सके, जिसके अभाव में कई बार बहुत डिले होता है। और एक तरफ ग्लोबल डिमांड और एक तरफ पर्यावरण और सब चक्कर चलते रहते हैं। तो उसका मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है। जितना स्मूथली काम होगा उतना ज्यादा आप अपना काम एक्सपेंड कर पाएंगे। आर्किटेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट है आर्किटेक्ट को कैसे इन्वॉल्व करके इस सेक्टर को बढ़ाया जाए, बढ़ भी रहा है। तो तमाम तरीके से मैं देखता हूँ कि जो भी चैलेंजेज हो चाहे स्थिति बने, पर इलीगल माइनिंग का एक बहुत बड़ा इश्यू है। इलीगल माइनिंग का बहुत बड़ा इश्यू है, चाहे वो स्टोन के अलावा बजरी के अंदर बहुत ज्यादा है। ये हम लोग प्रयास करें कि अभियान चलाए जिस प्रकार से रोक लगे, वो एक अलग इश्यू है। एक मैं आपको सबको आग्रह करना चाहूंगा मानवीय दृष्टिकोण से, जो माइनिंग के जो लेवल है और जो सिलोकेसिस बीमारी लगती है उनको, वो ऐसा मानवीय पहलू है कि सालों तक मालूम ही नहीं पड़ा कि ये कोई सिलोकेसिस बीमारी भी होती है। डॉक्टर लोग भी टीबी समझ के इलाज करते हैं। आप कल्पना कीजिए कितने लोग मर गए होंगे बेचारे, टीबी का इलाज हो रहा है, एक बीमारी सिलोकेसिस की। और जब रिसर्च होने के बाद मालूम पड़ा कि बीमारी सिलोकेसिस की है, तो हमने कुछ कदम उठाया स्टेट गवर्नमेंट ने। और मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इसके अंदर। हमारे राजस्थान में जो एक्टिविस्ट हैं वो भी इसको इश्यू बनाए हुए थे, पीछे निगेटिविटी और नाराजगी वगैरह। मुझे अच्छा लगा कि एक्टिविस्ट आ गया इस काम के लिए, और उसके लिए हम लोगों ने कदम उठाए हैं। कदम क्या हो रहा है, तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को पाबंद कर दें, आप लोग सारे प्रिकॉशन सुनिश्चित करें वहां पर, जिससे कि ये बीमारी किसी व्यक्ति को नहीं हो। एक तो बात ये, उसमें आपकी भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हम लोग तो बीमार पड़ गए तो इलाज करवा देते हैं, 2-3 लाख रुपए दे दिए उसको, उससे क्या होना, आदमी मृत्यु हो जाती है। तो मानवीय पहलू को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मानवीय पहलू को ध्यान रखना आपके खुद के इंटरेस्ट के अंदर, आपकी संवेदनशीलता झलके उसके अंदर कि आप कितने संवेदनशील है। उस पर मजदूर भी लापरवाही करते हैं, मुझे मालूम है कि वो भी परवाह नहीं करते हैं। पर आपके मैनेजमेंट के जो लोग हैं माइंस में जब भी है, उनको आपको कहना पड़ेगा बुला के कि हमें हमारे माइंस के अंदर जो प्रिकॉशंस के इक्विपमेंट हैं या जो सुविधाएं हैं या जो भी तरीके हैं, उन तमाम तरीकों को हम लोग अपनाएंगे और सुनिश्चित करेंगे वहां पर उसके बाद कोई नहीं जा रहा है। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम आप मानवता के लिए करेंगे, उसमें आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। बाकी तो जो बातें कही गई है वो मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता, तो
कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे ढंग से एक्सपेंशन हो रहा है इंडस्ट्री का। करीब 390 जगह रिको ने अपना ब्लॉक इस तरह पर अपना एरिया डेवलप करना है। तब कल्पना करते तो हर ब्लॉक के अंदर, राजस्थान के हर ब्लॉक के अंदर अगर इंडस्ट्री एरिया बन रहा है तो आने वाले वक्त में उसका कितना लाभ मिलेगा और स्थानीय स्तर पर ही आपको कई जगह उद्योग लगाने की सुविधा मिल जाएगी। वो हो रहा है यहाँ पर 146 जगह अभी तक और ज्यादा विकसित किए जा रहे हैं। 390 जगह तक लग चुके हैं, बन चुके हैं। इस तरह सजा बनते हमने एमएसएमई उद्योग को जो एक्ट बनाया है असेंबली के अंदर, उसके बाद में आप देखिए 3 साल या 5 साल कर दिया, कोई तरह की उनको परमिशन सरकार से लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। उसका बड़ा शानदार इम्पैक्ट पड़ा राजस्थान के अंदर। करीब 15,000 जो है इकाइयाँ उससे बेनिफिट हुई है और 6,000 इकाइयाँ तो लग भी चुकी है। इस प्रकार कस्टमर पैकेज का जो काम है और अभी जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है 19 से 22 आ गई है, उसके अंतर्गत कस्टमर पैकेज दे रही सरकार। ये तमाम पैकेज हो, पॉलिसी हो, राजस्थान मेरी ख्याल से तो ज्यादा आप जानते होंगे, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राजस्थान देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में आगे नहीं, पीछे में नहीं होगा, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरा मानना है। तो आप निश्चित रहें, सब तरीके से हम लोग एक कदम उठा रहे हैं कि मैं उन कदमों को क्या बताऊँ आपको। इसलिए कह सकता हूँ कि हर क्षेत्र में राजस्थान प्रगति करे। एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस, एग्रो एक्सपोर्ट का अलग हम लोगों ने जो फैसले किए हैं उसमें बहुत 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है। आप मेरी संबंधित नहीं है मुझे मालूम है, पर मैं कहना चाहूँगा राजस्थान में बहुत सारी सुविधाएं हैं, माहौल है, लेबर अनरेस्ट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है और सब तरीके से मैं समझता हूँ कि राजस्थान मुफीद है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो हमारे बाहर के छात्र आए हैं देश विदेश से, सबको मैं आह्वान करूंगा कि आप आइए, आप ही नहीं। मुझे पता है साउथ की इंडस्ट्री जो है जो लगी हुई है वो भी यहाँ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि राजस्थान की पॉलिसी ज्यादा बेहतर है साउथ से। वो भी एक कारण है कि यहाँ संभावना बढ़ी हुई है। तो आप सही जगह आके बैठे हुए आए, रेस्टोरेंट मार्ट हो रहा है। मैं आपको सबको मेरी बहुत बहुत आपका मैं स्वागत भी करता हूँ। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हम बात करते हैं बार बार, उसका हम लोग और ज्यादा सुधार कैसे करेंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और तो और हम लोग CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसके पैटर्न में हम लोग राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से गठन भी कर रहे हैं। ये मेरी पहले घोषणा है। इसमें हमारे विंड एनर्जी, सोलर वाले आते हैं, करोड़ों अरबों के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, माइनिंग के अंदर है, तो सब जगह कोई तकलीफ नहीं है आपको, स्पूर्ति काम हो जाए सब। इस तरह हम लोग पूरी तरह प्रयास होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ बता रहे हो तो आपको आपका आना का मकसद ही है, और मकसद के साथ में आपका आना इस बात का प्रतीक भी है कि राजस्थान से आपको बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए आप आए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी उम्मीदें पूरी हो, उस दिशा में हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। ये आश्वासन देता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, और आपकी जो सोच मंशा जो नीतियाँ है राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की तरफ और सभी के लिए और अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाने के लिए। Ladies and gentlemen, in every India Stone Mart, we've had a tradition of conferring the Lifetime Achievement Award to the individuals, to exemplary leaders for their outstanding contributions, for their achievements throughout their lifetime.
and also presenting the ISA Awards, which recognize the leading architects and the designers of the country.